Namaskar, Vande Matram. Today we are going to talk about communication skill. As you know, we are blessed with words. We are blessed with gestures, postures, which most of the animals do not. And this is our fortune, that we can express ourselves. One thing I was reading somewhere, we can express ourselves through more than 30 kind of expressions from our face only. Isn't it amazing? When you see a lioness, if she's loving her cubs, her gestures and her postures, because they are not blessed with the words. The postures, you'll find that, oh my goodness, I'm afraid she may eat the cub. And if a mother deer, she's loving her loved ones, or she's with anger, even then, she cannot show her anger because she has been designed only to be killed. And we have been designed for doing anything. This is just through communication. We can communicate ourselves through many, many ways. So first of all, words. Power of words. In every civilization, if you go to Europe, to South Africa, or Africa, all the continents, they have their own languages. If they do not have languages, because there is a little difference between language and dialect, because through script we express. Because of the invaders, our beautiful libraries were burnt out, as you must have heard about it. But what did they do? They crammed it, and now the Granthas and Puranas are with us. Because there was a script, Devanagari script. So in each language, there is a script. But it is not necessary that any dialect or every dialect has got its script. Wagadi, Mewadi, Dhundadi, Shekhawati, in our state even, we do not have our own script, but we have our dialect, and we are proud of it. कहते हैं 12 कोस के ऊपर भाषा बदल जाती है और पानी बदल जाता है. So this is how we change our expressions through this medium of word, through language, through dialect. Then we come to the gestures. A person, through his gesture, he can show as if he is angry with you or he is pleased with you. He doesn't require any word to express. I remember when one of my professors, I think I must have done a great mistake. And when I was summoned by my professor, and I went over there, he kept on speaking nothing. And I was afraid, please say sir something. He did not utter a single word. But his silence was so penetrating. And I could come to know that he is very much angry with me. He did not say anything. He called me. I was standing there for 15 minutes and then say, go. And I came. So the silence has got its own communication, communicatory power. Posture. Suppose if you go there, a person, if you enter, suppose he shook his hands, he used to, and he doesn't at that time. It means he is not pleased with you. And if he hugs you, it means he is so pleased. So this is a gesture. Some postures. How he is sitting or how she is sitting, we may come to know. So we should be thankful enough to our Bhagwan, the God, as He has made us
as a human being. Now let us come again, the power of communication. But these are three kinds of communications what we have. There is a little hairline difference between communication and interaction. Interaction is at par. So two friends are talking to each other and discussing something, that is interaction. Because he is also listening, he is giving some suggestion, or he is gossiping, whatever it is, they are interacting. But what is the difference between communication and interaction? In interaction, both are taking part. But in communication, one is messenger, second is receiver. So in our management theory, sometimes we have to be at receiving end, and sometimes we have to play a role of messaging. So we have to understand where we have to communicate, where we have to become messenger, where we have to become receiver. This is how we can go for a good administration. The best example of communication is Srimad Bhagavad Gita, where Shri Krishna, now he is a messenger. He gives a message to Parth, that is Arjuna. When Arjuna refused to even lift his Gandiv to kill the evil people, the Kauravas, against the justice, they did injustice to the Pandavas. So it was a Dharma Yuddha. In Dharma Yuddha, when Shri Krishna asked Arjuna to lift his Gandiv, when he blew his Shankh, Shri Krishna's Shankh name was Panchajanya. So when he blew the Shankh, means it is a proclamation of battle. Okay, chalu karo, ladai. But Arjuna did not. Then he said, hey Arjuna, there are 18 chapters, we call it 18 Adhyay, Srimad Bhagavad Gita. He said, immortal world, many things he said. Some of them, let me give you the example. He said, tapasvibhyo dikho yogi jnanibhyo mato dikhe. कर्मिभ्यश्च दिखो योगी तस्माद् योगी भवार्जुने. तपस्वी बहुत बड़ा योगी होता है, ज्ञानिभ्यो भी मतो दिखे, ज्ञानी भी बहुत बड़ा योगी होता है. कर्मिभ्यश्च दिखो योगी, परंतु कर्मी जो कर्म करता है वो सबसे बड़ा योगी होता है. तस्माद् योगी भवार्जुने. हे अर्जुन, तू वैसा योगी बन. क्या सुंदर बात कही. क्योंकि द्वितीय अध्याय में, सेकंड चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, श्री कृष्ण सेड, भगवान कहते हैं योग है कर्मसु कौशलम, यानी एक्सीलेंस इन एक्शन इज योग. कमाल की बात है. एट दैट टाइम भगवान कृष्ण टोल्ड एक्सीलेंस इन एक्शन इज योग. Somewhere we know the meaning of योग is योग चित्त वृत्ति निरोध है. चित्त की वृत्तियों का निरोध ही, इसको खत्म करना is योग. Sometimes in Patanjali yoga, yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, samadhi. So we must understand this communication that Shri Krishna was Yogeshvara. He was Yogeshvara. Means he was the god of all the yogas. It means he must have followed yam, niyam, because it is very difficult to follow yam, then niyam, then asan, then pranayam, then pratyahar, dharana, dhyan and samadhi. So he was above all. But Arjuna did not. He did not grasp it because he was full of emotions. He said, he is my guru, he is my dadaji, he is my uncle. No, I cannot. And he was full of grief. He did not. But it was a dharma yuddha. Then Shri Krishna says, Sannyasa karma yogasya nishreyasa karao bho. Teostu karma sannyasat karma yogo vishishyate. फिर भी अर्जुन के समझ में नहीं आया. नहीं, मैं तो नहीं उठाऊंगा. फिर उन्होंने कहा कि भाई अर्जुन, 3 गुण हम सब में हैं. सत्व गुण है, तमो गुण है और रजो गुण है.
हर, चाहे एक बड़े से बड़ा आदमी है, छोटे से छोटा, मतलब जिसको हम कह सकते हैं किसी में तामसिक गुण होता है, प्रमाद, आलस्य, इसको मार दूं, इसको ठोक दूं, ये कर दूं, व्यसन, ये तामसिक गुण हो गए, इसको मार दूं, इसको पीट दूं। तो अब हर व्यक्ति के अंदर तामसिक गुण भी मौजूद है। रजोगुण, ये खरीद लूं, ये जमीन भी ले लूं, ये खान भी ले लूं, वो कर लूं, चंचल, ना, चंचलता का प्रतीक होता है। एक सत्व गुण, सात्विक रहता है आदमी, उसके मन में किसी के प्रति निंदा का भाव नहीं, प्रसन्न सदैव रहना, दूसरों को कैसे प्रसन्न रख सकता हूं, किस प्रकार से अपने ज्ञान का प्रकाश सब जगह फैला सकता हूं, वो सत्व गुण हो गया। तो श्री कृष्ण ने कहा सत्व लघु प्रकाश मिष्ट मुष्टम्मकम चंचल रह जाए, गुणों के उन्होंने बताए हैं। सत्व लघु, सत्व गुण वो लघु होता है पर प्रकाश से भरा होता है। सत्व लघु प्रकाश मिष्ट मुष्टम्मकम चंचल रज है। गुरु तमय, जो तमो गुण होता है वो भारी होता है। गुरु तमय प्रदिवच्चार्थ तो वृत्ति ही, इन सारे गुणों की मैंने तेरे को वृत्तियां बता दी है। हे अर्जुन, अब तो गांडी उठा, सत्व गुण को प्रबल कर। मना लुक एट द कम्युनिकेशन। हम कौन से कम्युनिकेशन से, हो सकता है कि पहले अर्जुन ज्ञान योग से प्रभावित हो जाते, हो सकता है कि वो कर्म योग से प्रभावित हो जाते, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि श्री कृष्ण को तीनों ही योग बताने थे, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। अब भक्ति योग में क्या होता है कि वहां तर्क लगता ही नहीं, वहां सिर्फ आस्था लगती है। लेकिन वहां भी तर्क किया, अर्जुन ने कहा कि नहीं मैं तो नहीं। तब फिर श्री कृष्ण ने कहा, देन ही कम्युनिकेटेड लाइक दिस, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब चीज को त्याग करके, धर्म का मतलब होता है, जैसे ये लाइट है, लाइट का धर्म क्या है? चमकना। हम बिल्कुल अलग चीज सोचने लग जाते हैं। गीता, मद भगवद गीता उपनिषद का एक पार्ट है और उपनिषद भारतीय दर्शन का एक पार्ट है। सो दर्शन, द फिलोसफी रिक्वायर्स लॉजिक, where religion does not. So there is a logic in every sentence of Srimad Bhagavad Gita, which is the best book on communication. So when he said sarva dharmani parityajam mamekam sharanam vraja aham tam sarva papebhyo mokshishyami ma shuche, मैं तेरे को सारे पापों से मुक्ति प्रदान कर दूंगा, तो चिंता मत कर। उसने वो क्यों नहीं चिंता करूं, आप कैसे मुक्ति दे दोगे मेरे को? तब फिर श्री रामधारी सिंह दिनकर जो हमारे कवि हुए, उन्होंने उसको सरल शब्दों में कहा कि डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले। जो अर्जुन, जब दुर्योधन ने उनकी सभा के अंदर उनको बांधना चाहा, तो वो संधि कराने के लिए गए थे महाभारत के युद्ध के पहले, तो उन्होंने कहा कि जो था असाध्य साधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, डगमग डगमग दिग्गज बोले भगवान कुपित होकर बोले, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है संसार सकल, मुझ में लय है झंकार जगल, सब जन मुझसे पाते हैं फिर लौट मुझे में आते हैं। तो ये भाव जब श्री कृष्ण ने उसको बताए, तो फिर श्री कृष्ण ने फिर तर्क किया, मतलब वी हैव टू रीच एट द कंक्लूजन बिकॉज इट इज अ फिलॉसफी। उन्होंने कहा एक बात बताओ, जब आप ही सब कुछ हो श्री कृष्ण, तो आप कर्म क्यों कर रहे हो? आप तो कर्म से परे हो। तो सब श्री कृष्ण ने कहा कि यदि मैं कर्म करना छोड़ दूंगा तो तुम भी तो कर्म करना छोड़ दोगे। तो मेरे पर तो किसी कर्म फल आना नहीं, लेकिन तुम पर आ जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम जो है अपने, तुम तो ये मान गए कि मैं हूं, विराट स्वरूप बताया, तो कोई सारा संसार इन्हीं से आता है। तूने कहा बॉस आप में है क्या सब कुछ? ओ एवरीथिंग इज यू। और फिर मेरे को किस बात का डर? नहीं तो फिर फियर ऑफ फेल्योर है, क्योंकि जब श्री कृष्ण में 18 अक्षौहिणी सेना सामने दे दी थी श्री कृष्ण ने, और अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपनी तरफ लिया था, तो उन्होंने कहा जब सारा संसार के मालिक अगर मेरे साथ में है, सारे संसार के कर्ता और धर्ता मेरे साथ में है, तो मुझे किस बात का डर? और फिर दिस इज कॉल्ड टोटल सरेंडर। फिर दिमाग में लगाया और फिर उसने कहा बोलो किसको ठोकना है, और उसने फिर करके और सारों को मारा। और ये महाभारत की कथा फिर उसके बाद में है। सो दिस इज हाउ द कम्युनिकेशन वर्क्स। कहते हैं बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। जब हम किसी की बात सुनते हैं हम प्रभावित होते हैं। क्यों होते हैं? हम उसके बातों से प्रभावित होते हैं। हाउ ही स्पीक्स, हाउ ही कम्युनिकेट्स। व्हेन we receive a communication, then we go for interaction. और interaction के बाद में आपस में, जैसे अभी अपन में बात हो रही है, then you after when I leave the place you will interact with each other.
इंटरेक्शन में क्या होगा? अरे यार वो जो बोल के गए थे, एवरीवन नोज इट, इसमें नया क्या है? अरे नया नहीं भाई, आज जो उन्होंने बताया तुमने कभी देखा ही नहीं था। क्या होगा? एक्शन। नेक्स्ट स्टेज एक्शन, देन रिएक्शन। फिर सब बात करेंगे आपस में, नहीं नहीं यार इसका मतलब ये है कि श्री कृष्ण ने तो बात तो कायदे कही। तो सिंथेसिस क्या आ गया हमारा कम्युनिकेशन का? हम एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंच गए। तो दिस इज हाउ कम्युनिकेशन वर्क्स। सो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड, प्लीज कम्युनिकेट और प्लीज इंटरैक्ट एंड रीच एट द कंक्लूजन। द सक्सेस will kiss your feet and may you come off with flying colors. Thank you very much. Vande Bharat, Vande Mataram, Bharat Mata ki Jai. Jai Shri Ram.